hormones and endocrine glands. Okay. What are hormones? Hormones क्या होते हैं? These are intracellular messengers. Now what is intracellular? Intra means from one cell to another cell. Okay, this is called as intracellular. So these carry messages from one cell to the another cell. Obviously they do so in response to a stimulus. Okay, so these are chemical messengers. Okay, and these are non-nutritive in nature. Okay, I am purely referring to NCERT class 11th book. Okay, so hormones are non-nutritive in nature. They do not bear any sort of nutrient, but still they are very important for our body as they carry information from one cell to the another. Okay, examples of hormones are thyroid hormones. Okay, adrenaline, etc, etc. Sorry, adrenaline. Okay, etc. We will discuss these hormones in the subsequent sections. Further, these hormones are released by glands. Okay, released by glands called as endocrine glands. So we will mainly discuss about endocrine glands. Okay, but there are also other two types of glands called exocrine glands and autocrine glands. Okay, so exocrine glands and autocrine glands are not in our syllabus, so we will specifically discuss about endocrine glands only. Okay, so now what are endocrine glands? These are ductless glands. Okay, ductless glands, meaning they do not have a cap, I would say. ठीक है, इन glands में ऐसे एक cap type जो होता है वो absent होता है. ठीक है, अब अगर cap absent है तो इसका मतलब जो flow हो रहा है वो continuously होता रहेगा. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, these hormones are released only when they are needed. Okay, these are produced only in response to a certain type of stimulus that we will study. Okay, so for now bear in mind that endocrine glands are simply the ductless glands. These do not have ducts. These release their secretions in the blood. Okay, and blood further carries these hormones to the target. ठीक है, जैसे for example there is a requirement of the hormone in our abdominal area. Okay, like in the region around stomach.
So what happens? The endocrine glands secrete their secretion in the blood, okay, and this blood, it will carry the hormone to the abdomen region, okay. So what it means? It means that the endocrine glands are they might not be present at the site of their requirement. For example, like there is a requirement of a hormone near the stomach area, okay. एब्डोमेन में किसी हार्मोन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हार्मोन चाहिए है एब्डोमेन में, ये इसका जो ग्लैंड है जो इस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे एब्डोमेन में ही प्रेजेंट हो, ठीक है। वो किसी डिस्टेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकता है और वहाँ से वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज़ करेगा ब्लड में, और ब्लड जो है वो उस टारगेट ऑर्गन को पहुँचाएगा उस हार्मोन को, ठीक है। these glands are not present, may not be present at the site of requirement, okay. Further, there are different types of endocrine glands, okay. We will briefly discuss about them. The first one being the pituitary gland, okay. Pituitary gland. Pituitary gland is located in the sella turcica of sphenoid bone in cranium. क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सेला टर्सिका करके एक छोटा सा ऐसे रीजन होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ क्रेनियम की, ठीक है। ये हमारा नोज, the lip portion, okay, this is the head portion. Pituitary gland is located somewhere here, means this portion of the brain, okay, somewhere here pituitary gland is located. There is this space called sella turcica, okay. This is the cranium, the brain box, okay. Inside it our soft brain portion is located, cerebellum, okay. and उसके अंदर एक ऐसे छोटा सा एक पोर्शन होता है जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये हार्मोन जो है, ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बताती हूँ इसकी। ये देखिए, ऐसे ये हमारा नोज़, ये लिप्स, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है हमारा, और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इस पोर्शन में, जैसे मैंने बताया, इस पोर्शन में हमारा जो है एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट इज़ like somewhat this sort of in shape, okay. Here it is located, okay. I hope it is visible. Further, pituitary gland
Now we will discuss about the structure of pituitary gland. ठीक है, pituitary gland जो है वो हमारे सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है. Its structure somewhat looks like this. Okay. It has these comb-like cells, जैसे एक बी का कॉम्ब होता है वैसे ही इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इस पोर्शन को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी. Now what is anterior and what is posterior? Okay, anterior portion is the upper part of the body. Okay, the upper portion of the body, like consider this is a body. Okay, consider this is a man. Okay, so anterior portion would be this, the upper portion of the body, and posterior would be the lower portion of the body. Okay, so these are the two parts of the pituitary gland, the anterior pituitary and the posterior pituitary. In between there is pars intermedia. Pars intermedia is the intermediate portion in between the posterior and the anterior pituitary. Okay, this is the hypothalamus. Okay, and this is the hypophyseal stalk. Okay, hypophyseal stalk means the portion connecting the hypothalamus and the pituitary gland. Okay, the stalk is called, this portion is called the hypophyseal stalk. Okay, so further we will talk about hypothalamus. Brief description about hypothalamus. Hypothalamus is the basal part of diencephalon. Okay, हमारा जो ब्रेन होता है हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, the forebrain, the midbrain and the hind brain. Okay, like this. These are basic concepts, so I will like to diagrammatically show you stuff. Okay, I'm sorry for the inconvenience. Okay, I lost the document. This is the brain
ओके। मेड्यूला, फोर ब्रेन, ऐसे से होता है मिड ब्रेन, एंड दिस the lower portion is called the hind brain. Okay, this chapter does not focuses mainly on the structure of the brain. Okay, we will discuss the complete structure in the concerned chapter. Okay, so briefly, so I would like to tell you that this portion is called the forebrain, this is called the midbrain, and this is called the hindbrain. Okay, so hypothalamus is in the basal part of diencephalon, that is the forebrain. Okay, this is the forebrain. In this portion, this is the forebrain and this is the basal part. Okay, this is the basal region of the forebrain. So hypothalamus is located here in the basal portion of the forebrain. Okay, further, it contains several groups of neurosecretory cells called the nuclei, which produce hormones. Okay, so hypothalamus has various types of neurosecretory cells. ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे हॉर्मोन्स. ठीक है, these hormones further regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. So what we see that hypothalamus releases the hormones, such hormones that regulates the secretion of hormones from the pituitary gland itself. Okay, we studied about pituitary gland in the previous section. So we see that in a way the hormones produced by the pituitary gland are regulated by the secretions of the hypothalamus. That is, hypothalamus secretes the hormones that regulate the secretion of the hormones from the pituitary gland. Okay, so this shows that the release of hormones from pituitary gland is under the control of hypothalamus. Okay, and this is also very obvious from the diagram of the pituitary gland that I drew in the previous section, जिसमें मैंने दिखाया था कि ऐसे जो है हाइपोथैलेमस यहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, और ये हाइपोफिशियल स्टॉक है, ये वाला पोर्शन जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है. ये पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, दिस इज पार्स इंटरमीडिया, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, सो व्हाट वी सी इज कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी वाले पोर्शन के ऊपर लोकेटेड है. तो इसका मतलब जो ये हार्मोन्स रिलीज़ करेगा उसके बेसिस के ऊपर जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहा है. सो ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. ओके, further, the hormones produced by the hypothalamus are two types. ठीक है, दो टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करेगा ये, जो कि फर्दर फिर उसके बाद पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेंगे. ओके,
कौन से दो टाइप्स के होते हैं? एक होते हैं इनहिबिटरी और एक होते हैं रिलीजिंग, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज करेंगे हाइपोथैलेमस, और रिलीजिंग, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हाइपोथैलेमस में से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन रिलीज करने में। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस में से इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज हो रहा है तो ये स्टिमुलेट कर रहे हैं पिट्यूटरी को कि ये वो वाला पर्टिकुलर हार्मोन ना बनाए, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। रिलीजिंग हार्मोन में जैसे आ गया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा?